Good afternoon, everyone. All of you are requested to please log in on your LMS and download the pre-module working file from the second module. That says formatting essentials. If you guys have any question from the previous module, please let me know. एक बार आपका नाम क्या था? अवनीश, पंकज, शुभम, शिवम, all right, guys, I hope I am audible to everyone. Formatting essentials to the online audience, guys, do download. अगर नहीं किया आप लोगों ने डाउनलोड अभी तक तो प्लीज डाउनलोड इट. We are going to now start working on formatting essentials part. So in last class we started our learning journey with Excel and we understood about the Excel's important components. We explored some of the important keyboard shortcuts. We learned about some important Excel features like text to column, flash fill, autofill, merge and center, remove duplicates, etc. Today's class is going to be on formatting part. You will understand how Excel deals with different type of data sets and how we should be presenting our data. Okay, so I have asked you guys to download the pre-module working. We will be using the same, but I will tell you when to use it. Okay, so you do not have to do all activities along with me. आपका focus please screen पर होना चाहिए, ठीक है? Okay. Before I start with the first topic, I am going to take some inputs from you guys. Okay, on one of the use case. What I am doing here, I am just simply coming and pasting these names and going to make the screen look larger. Okay, data look larger. यहाँ पर आते हैं हम, कोई एक एड्रेस का कॉलम ले लेता हूँ मैं, स्टेट ले लेता हूँ, रैंडम डेट हम ले लेंगे और एक वैल्यू ले लेंगे. तो एड्रेस पर मैं यहाँ पर आने के बाद आई विल बी सिंपली जनरेटिंग अ रैंडम एड्रेस और यहाँ पर रैंडम स्टेट्स में जनरेट कर लेता हूँ एंड देन आई विल आल्सो बी गेटिंग द डेट एंड वैल्यूज आल्सो. ओके, अब मेरा क्वेश्चन सबसे है, हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल? बाय द वे, कितने लोग वर्किंग है? आप सब लोग वर्किंग है? Okay, how many of you have a habit of selecting the data? जब भी आपको कोई नया डेटा मिलता है, you have a habit of process of selecting the entire data and then coming to home ribbon tab and making it. आप में से कितने लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं? Okay, 1 2. What about you guys? You guys don't follow? क्या करते हैं आप? कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटा को? ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे. अरे आप ऐसे कुछ प्रेजेंट करने, अच्छा, आप उसमें कुछ भी अलाइनमेंट चेंज नहीं करते? ओके, ठीक है, आपको अलाउड नहीं होगा चेंज करना, है ना? और कौन करता है? आप सब करते हैं. क्यों करते हैं ऐसा? व्हाट अबाउट ऑनलाइन यूजर्स? The online users, okay, all right. Now, why do you guys do this? Why do you do it? क्यों करते हैं आप ऐसा? दिखने में अच्छा लगता है. ओके, और ये आपको किसने कहा कि दिखने में अच्छा लगता है? आई एम श्योर आपका आंसर भी सेम होगा. नहीं, जैसे हम जो वैल्यूज होती है वो हमारी इधर उधर कहीं से ज्यादा कट ना हो जाए, अगर प्रॉपर सेंटर में अलाइन हो जाए और इजीली होती है पढ़ने में. वही बात होगी ना, अल्टीमेटली प्रेजेंटेबल पर्पस के लिए.
है ना? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन एल्स? सेम। बट क्या आपको किसी ने सिखाया है कि आपको डेटा को सेंटर लाइन में भेजना है? Do you guys know each other? But your answer is same, and it is with everyone. We all think that by doing this, the data is going to look presentable. But अभी आप एड्रेस कॉलम की तरफ देखकर मुझे बताएंगे, आपने कहा कि आप नहीं करते, आप क्या करते हैं? मेरा काम MIS का काम होता है, बट हम जो एड्रेस का पार्ट हम एक ही सेल में रैप कर लेते हैं। जो वैल्यूज होती है हम वैल्यूज एकदम मिडिल में सेंटर लाइन कर रहे हैं, ताकि हमारी वैल्यूज डिफरेंटली पता चल जाए कि उस कॉलम से मर्ज ना लगे। सेंटर लाइन कर देते हो ना? हाँ जी। क्यों करते हो सेंटर लाइन? ताकि जो डेटा है हमारा डेटा उस लाइन में मर्ज ना दिखे हमारे। वो ठीक है, चलो आपने यहाँ पे सेंटर लाइन कर दिया, रैप टेक्स्ट कर दिया, आप कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते, आप ऐसे लेके आना चाहते हैं। दिस इज हाउ यू आर सेइंग। मेरा क्वेश्चन है सेंटर लाइन करते ही क्यों है हम? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या किसी ने आपको बताया है कि यू हैव टू सेंड द डेटा टू सेंटर लाइन? नो, you have seen each other and then thought that this is a standard practice. If he who has been working in the system for long, if he is doing it, he is following it, then I'm sure like in that case I will also have to follow. So this chain is going on from past many years. But is this correct? तो अगर आप इस कॉलम की तरफ देखेंगे तो can you please tell me whether the data is looking presentable? Is it in a presentable form? So then why we are making and sending everything to center line? So it has a pattern. आपको क्यों अलाउड नहीं है फॉर्मेटिंग करना? Because especially if you exchange reports with people sitting in other countries, they don't like you to mess up with their reporting. और हम जब रिपोर्ट्स टेम्पलेट्स डिजाइन करते हैं, we do not want you to actually type data here and there so that it becomes mess for us. So just to avoid that situation, we put restrictions that you would only be allowed to enter values. You will not be allowed to make any changes in the formatting part. Okay? अब क्या है, जब भी आप एक्सेल में कभी कोई टेक्स्ट एंटर करते हैं, that always appears onto the left hand side. The number always appears onto right hand side. Okay? But at times the number may come on the left hand side also. अब हमने क्या किया, इसको सेंटर लाइन कर दिया और डेटा तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है, प्रेजेंटेबल लग रहा है। जब मैं फर्स्ट टू एंट्रीज को सिलेक्ट करता हूं तो सम इज आल्सो कमिंग 30, एवरेज इज आल्सो कमिंग 15, ओके, एंड काउंट इज आल्सो कमिंग 2, ओके। बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई सिलेक्ट द थर्ड वन? देन आल्सो द सम इज 30, एवरेज इज 15. हाउ कम? Not saluting the third. How do you know? Because I have entered in front of you. But how would you come to know if the data that you have and is coming in center? Okay, so basically it also tells us that how we should be keeping our data. Okay, that is we should follow always the standard alignment. So अगर कोई भी entry default left hand side पर जा रही है, इसका मतलब that is stored into text entries. Okay, अगर आप if you ever see any entry coming on the left hand side, it means that is text. That value is stored as text. Okay, and anything that you see coming on the right hand side, that is numerical entry. Okay, that's your numerical value. Understood? हाँ जी, अभी बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? We'll talk about that as well. Now, हाँ, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में वो कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, ठीक है? अब ये हो गया कि टेक्स्ट लेफ्ट में जाता है एंड नंबर राइट में जाता है, तो सेंटर में क्या? व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स एंड शुड बी डिस्प्लेड इन सेंटर? जनरली हम कहते हैं टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट में रखो। अगर आपके कॉलम में यू आर एक्सपेक्टिंग नॉट मोर देन 3-4 कैरेक्टर्स लाइक यस, नो, मिस्टर, मिस, इस छोटे से आपके रिमार्क्स या टाइटल्स हैं, ओके, दैट यू मे डिस्प्ले इन द सेंटर। बट अगेन अगर आप इसको ओरिजिनल अलाइनमेंट में रखते हैं, इट इज ऑलवेज गुड। हेडर का जो अलाइनमेंट होता है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द कॉलम वुड बी डिसाइडेड। अगर नंबर्स हैं तो राइट में होगा, टेक्स्ट है तो लेफ्ट में। बट अगर अब वापस क्वेश्चन आता है कि सेंटर में क्या, फिर हम क्या प्रेजेंट करेंगे?
So do you guys understand by the Boolean values? True, false, not 0, 1. Okay. So अगर कोई भी function, there are many functions which return the answer in Boolean values. So if any function is returning the answer in Boolean values, true or false, or even if you have to type, it will not only become center line but will also be capitalized. मैंने small में लिखा, okay, और जैसे ही मैं enter करता हूँ, वो capital होके center align में आ जाता है. I have not made any alignment here, remember. और या फिर अगर कोई भी function error return करेगा, then also it would appear into center. तो सेंटर में बूलियन वैल्यूज आती हैं, एरर्स आती हैं. ओके, अंडरस्टूड. सो अगर कोई एंट्री लेफ्ट में आ रही है तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरे पास टेक्स्ट है और नंबर है. बट व्हाट अबाउट डेट एंड टाइम? चलिए सबसे पहले मैं डेट एंटर करता हूं यहाँ पर. तो कंट्रोल सेमीकोलन होता है शॉर्टकट फॉर करंट डेट. ओके, तो मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस करता हूँ एंड कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन होता है current time. Okay, and control the semicolon. Now here we are seeing the slashes are coming, colon is also coming, AM PM is also coming, right? Alphanumeric. तो अच्छा चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, what do you think, do we have alphanumeric or numerical values here? Very good. Okay, who all believes we have numerical value here? First raise hand. Anyone who believes numerical value? Good. And now who all believe we have alphanumeric? Raise hand. 1 2, very nice. 3. दो ही ऑप्शन दिए मैंने, या तो न्यूमेरिक या अल्फान्यूमेरिक. तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है, मे बी वाला. तो अगर नंबर्स में नहीं सोचे तो अल्फान्यूमेरिक होगा, है ना. अगर अल्फान्यूमेरिक नहीं सोचे तो नंबर्स होगा. दोबारा मैं पूछ लेता हूँ, आकांक्षा, यू आर रेजिंग हैंड फॉर नंबर और अल्फान्यूमेरिक. रेज हैंड नाउ इफ यू बिलीव इट इज नंबर. नो, ओके. Raise hand now if you believe it is alphanumeric. What about you guys? Now again, anyone who believes this is number or these are numbers? Very good. Now raise hand if you believe we have alphanumeric value. What happened? I think this is numerical. Tell me then, why do you think it is numerical? It's automatically left side. Left में नहीं है, right में. So right side. So you sure it is numeric? Yes, sir. We can see MPM also there. That is the right time. The time को represent कर. हाँ, तो AMPM आ रहा है ना यहाँ पे फ्लैशेस आ रहे हैं, ये तो कैरेक्टर्स होते हैं. बट वो टाइम सेटिंग की वजह से आ रहे हैं, जिसमें हमारा कोई और मतलब वो नहीं है, अल्फान्यूमेरिक नहीं है, हम कोई वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं. कैरेक्टर्स जो AMPM होता है ना, वो भी अल्फा न्यूमेरिक, मतलब वो कैरेक्टर्स ही होते हैं. स्लैशेस भी कैरेक्टर्स होते हैं, कॉलन भी कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. ऑलराइट, नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज न्यूमेरिकल. व्हाट डिड यू से? एक्सप्लेन इट अगेन. You may. Why you think this is numerical? It's aligned automatically right side, sir. It is aligned automatically on the right side. What did we just discuss? Anything that comes, okay, then it means simply, अगर कोई भी value right hand side पे, तो it simply means we have numerical value. Now let us prove whether this is numerical value or not. अल्फा न्यूमेरिक में क्या कभी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो? अगर मैं बोलूं अनिल 10 है प्लस 20 कर दूं तो अनिल 30 हो जाए. Here you have value. Sometimes we add days and we return the due date. You can only perform calculations on numbers values. Okay. When you copy paste the date and time, your time get to see the numbers appearing. है ना? ये numbers आते हैं. We know that how to bring the format back. आप immediately जाते हो, right click करोगे, format cells पर move होते हो, and then यहाँ पर आकर date category पर jump करते हो, and then you choose the required date format. You do it or not? Now let me ask you, what is this number then? वो तो पता है इसमें date represent कर रहा है, but मेरा question ये है कि अब ये number है क्या?
how this number is being generated. We know the solution that if this number appears, we have to do right click and then we have to go to format cells and apply the required format. But my question is, what is this number? Excel follows 1900 calendar system. Every application follows different calendar system. SQL फॉलो करता है 1000, उसमें आता है 1 जनवरी 1000 से लेकर आप 31 दिसंबर 9999 तक टाइप कर सकते हैं. एक्सेल में जो अलाउ होता है वो होता है 1 जनवरी 1900 से लेकर 31 दिसंबर 9999. तो यानी कि जो वैलिड डेट है वो 1 जनवरी 1900 से लेकर 31 दिसंबर 999. तो अगर आप किसी सेल में 1 एंटर करोगे एंड उसको आप डेट में कन्वर्ट करोगे, you are going to get a date of 1st January 1900. If you enter 10,000, it will show you the date as 18th May 1927. तो अगर आप 1st January onwards 1900 से काउंट करते चलोगे, so today is 45,333rd day. And how much we added here? 10. So what it should be showing? 343. Okay, 1 is equivalent to single day. Number 1 represent or equivalent to 1 single calendar day. तो हमने 10 days add किए. So what happens? Excel and all applications stores date into serial number. The reason we are seeing the date in this date or time in time format so that you and I can interpret it easily. Suppose अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर एंटर करता हूँ और मैं पूछता हूँ कौन सी डेट है, आप बता पाएंगे? ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा. Even I won't be able to tell unless I go and I apply the required format. Okay, I apply required format here. So Excel, what Excel does, the moment you try entering the date, it brings the date into valid Excel date format. किस format में? Whatever date is being shown or whatever format is being carried with as per your system clock. The same format will be applied here for the date by default. तो आप मेरे सिस्टम में देखेंगे तो month is coming first followed by day and then the year. The same is applied here also. Okay, जब हमने यहाँ पर एंट्री किया. Understood? Okay. So अगर आपके पास किसी सेल में डेट एंड टाइम दोनों हैं, इसका मतलब आपके पास नंबर एंड इंटीजर वैल्यू. अब क्या है बेसिकली जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू होती है हमेशा डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट होता है. That is called integer. So the integer portion represent the date value and the decimal portion represent the time value. So 1, एक दिन में how many hours we have in a one day? 24. Which hour we are currently 12 hours. Okay, चलो अभी हम सोच लेते हैं कि let's suppose 14th hour is going on, which means 2 o'clock in the afternoon. तो अगर हमें सीरियल नंबर पता करना है 14 hours का, so 14 by 24, this is the serial number for 2 o'clock in the afternoon. Okay, understood? So 1 is equivalent to 24 hours and 1 is equivalent to 1 day also. Date is stored as serial number, so as time. Date is represented by integer, time is represented by decimal. Is that clear? और ये concept क्यों जरूरी है? Because when you would be having dates in the calculation and you will require to supply them in any date or any function, you are going to get confused most of the time. And ये हम भी देखेंगे जब हम next week में functions formula से start करेंगे. Okay, now time for us to jump onto this topic called custom cell formatting. ये topic क्या है basically? This allows us to change the appearance of any number without changing its actual value. अभी हमने क्या किया? उस नंबर को हमने डेट में शो कर दिया, उस नंबर को हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, उस नंबर को हम पोस्टल कोड में भी शो कर सकते हैं, राइट? So many things we have there, right? Okay, now we have already done it, right? So here we are given few examples. We are going to now understand that. So पहले आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे. I'll give you time to try this. Okay, हमारे पास ये टेबल है. I hope it is visible to everyone. I have got this table dummy data. I
would like to format the numbers given under sales amount into currency format separated by 1000 with 2 decimal places without changing its actual value. तो हम यहाँ पर आते हैं, select किया, then the shortcut to open the format cell dialog box is Control 1. Control 1 जब आप press करते हैं, so it is going to open the format cells dialog box. There you will be finding 6 tabs here. Okay. नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है. तो नंबर टैब के अंदर आपके पास 11 कैटेगरीज दी हुई हैं. नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल एंड कस्टम. ओके. यहाँ पर हमारे पास करेंसी फॉर्मेट है. सिंस वी आर आस्क्ड टू अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट, करेंसी कैटेगरी है, करेंसी पे गया, डिफॉल्ट करेंसी. अब हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी आर नॉट टोल्ड दैट व्हिच करेंसी सिंबल वी हैव टू शो, सो विल बी गोइंग अहेड विद डिफॉल्ट वन. तो यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल 2 डेसिमल्स भी हैं, मैं सिंपल क्लिक करता हूँ ओके पर. द मोमेंट आई क्लिक ऑन ओके, यू नोटिस हियर ऑल फिगर्स आर नाउ अपीयरिंग इनटू करेंसी फॉर्मेट सेपरेटेड बाय 1000. ऑटोमेटिकली जब करेंसी फॉर्मेट आप अप्लाई करते हैं तो कॉमा जो होता है ऐड हो जाता है आफ्टर एवरी थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट साइड. दैट मेक्स इट इजियर फॉर अस टू रीड द नंबर्स. ओके. देन यू आल्सो नोटिस द 2 decimals are appearing it on the right hand side. Okay. And we said that without changing its value. Now look at into the formula bar. If you look at into the formula bar, okay, you notice we have the actual value what we entered there is appearing it here. Okay, यहाँ पर कोई भी डॉलर साइन, कोई भी डेसिमल, कोई 1000 सेपरेटर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे. Remember what did we discuss yesterday? The formula bar shows you the actual content of the cell. ओके. स्पेशली जब हम नंबर डेटा के साथ डील करते हैं which has the number formatting applied, we once look at the formula bar just to get surety that what kind of values we have entered or we have got it there. Is that correct with and clear with everyone? Perfect. सेकेंड एग्जाम्पल है, थोड़ा सा रियलिस्टिक है आपके सिचुएशन से जो आप फेस करते हैं. डिस्प्लेइंग लीडिंग जीरोस. जनरली हमें समटाइम क्या करना पड़ता है, हमें किसी नंबर के आगे जीरोस को डिस्प्ले करना पड़ता है. नाउ वी नो दैट इफ आई एंटर एनी नंबर लेड बाय जीरोस, व्हाट विल हैपन? Zero will go away because of standard mathematical rule. Those zeros have no relevance when added to the beginning, right? So अगर आप लास्ट में करेंगे then of course it is going to make and change the figure. But when you add it in the beginning, it has no relevance. So that is why it is removing it. But at times, for presentation purpose, we want those zeros to be there. Suppose I want to ensure, like in this case, I have got these values. I want all the cells, okay, all values to appear in 5-digit format. चाहे वहां पर 5-digit value है या नहीं है. अगर 2 digits है तो remaining 3 digits should be replaced with leading 3 zeros. तो एक्सेल में 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग कोड्स होते हैं जिसको हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं. वन इज हैश, सेकंड इज जीरो. हैश इज इक्वल टू जनरल फॉर्मेट और डिफॉल्ट फॉर्मेट. तो जब आपने एंटर किया, व्हाट हैपेंड? द जीरोस हैड नो रेलेवेंस, सो ऑटोमेटिकली दे विल बी रिमूव्ड. So hash says it will not display any extra zeros wherever it is not required. तो वो zeros starting में required नहीं थे, उनकी कोई value नहीं है. So which is why they were removed. But zero formatting will ensure that whether or not that zero is relevant, okay, digit is relevant, it will be shown. तो suppose करो अगर वहां पे integer है दो, क्योंकि hash and zero दोनों integer value को भी represent करते हैं, दोनों ही डिजिट प्लेस होल्डर का भी रोल प्ले करता है. डिजिट प्लेस होल्डर होता है मतलब इंडिविजुअल डिजिट्स के लिए. ओके. डिफरेंस ये है कि हैश डज नॉट लेट टू डिस्प्ले एक्स्ट्रा जीरो एंड जीरो विल शो यू द जीरो इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके. तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ये फाइल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप 3-4 नंबर्स ऐसे ही एंटर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एक्सेल के किसी कॉलम में, एंड देन यू सिंपली कम हियर एंड सिलेक्ट द डेटा. Okay, selected ones. After you select, press Ctrl 1 and then jump on custom in number tab.
ठीक है। यहां पर आने के बाद आप लोग कस्टम में आपको टाइप में जनरल दिखाई दे रहा होगा, यू हैव टू सिंपली सिलेक्ट दैट। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर आना है एंड देन एंटर 0 0 0 0 0। ओके, 5 टाइम्स जीरोस आप ऐड करेंगे। फाइव टाइम्स जीरोस आपने ऐड किए। ओके, एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन ओके। द मोमेंट नाउ यू क्लिक ऑन ओके, राइट, व्हाट डू यू नोटिस? You notice now all figures appear into 5-digit format. समझ गए? अब आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे, then look at here in the formula bar, it shows you the actual value, right? But when you just come here, look at the Excel, it shows you 5-digit value, and more importantly, जब आप इस रेंज को सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर टोटल भी दिखाई देगा। अब इसका ऑल्टरनेटिव हम क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी के साथ आप नंबर एंटर करते हो, 0 एंटर करने के बाद you get the value, but in that case the number always appears on to the left hand side. फिर आप में किसी ने पूछा था कि वो कैलकुलेशन में यूज नहीं होता, अगर आप इस नंबर को, इनको हम कहते हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज। ये नंबर लग तो रहे हैं बट स्टोर किसमें है? टेक्स्ट में। Hence they cannot be used for any calculation. Understood? So in this case, when I select the range, I will still get the answer here. Understood? Any doubt? Next situation क्या है? हमारे पास डेटा है जिसमें column contains few numbers, okay, but these are large numbers. Now suppose you are sitting in a room with your bosses, with your managers or with clients, and you are asked to read such numbers, lengthy figures. So हमारे लिए problem क्या है? We have to count every single digit. Zeros तो नहीं होंगे हर केस में, you will have to count the digits, right? If you have 6 digit, then it is in lakh. If you have 7 digit, then it is in million. Correct? 7 digit total में बोल रहा हूँ, ठीक है? इंटीजर को फर्स्ट को छोड़ दोगे तो रिमेनिंग 6 मतलब मिलियन में है आपका। Now, if I want to show this figure in million, मुझे पढ़ना ही मिलियन में है, तो हम क्या करेंगे? जनरली हम क्या करते हैं? We take a help of helping column, something like this. और 1 million is equivalent to 10 lakhs. तो हम क्या करेंगे? फिगर को आके 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट? एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड वे वी हैव बीन डीलिंग एंड कंट्रोलिंग द लार्ज नंबर्स। बट इसमें चैलेंज क्या है? एक इसमें फॉर्मेटिंग का इशू है। At certain places no decimal is shown, in some places 2 decimals, and in one place we can see only single decimal. We'll have to standardize the data first. Also अगर हमें कुछ ओरिजिनल वैल्यूज में ऐड करना होता है या फिर हमें कुछ इसमें ऐड करना है मिलियन में, तो फर्स्ट आप इसमें ऐड करोगे, फिर वापस उसको बैक कैलकुलेशन करके ओरिजिनल वैल्यूज में लेकर जाओगे। सो स्टेप्स आर बीइंग इंक्रीज्ड। आप क्या कर सकते हो? सिंपल, डेटा पर आओगे, आप उसको सिलेक्ट करोगे। इफ यू हैव दिस डेटा, डू सिलेक्टेड, okay, once you done, press Ctrl 1. Ctrl 1 press करने के बाद again you will be jumping on to custom, and here you are going to remove general from type. Okay, then अब यहाँ पर क्या करोगे आप? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमारे पास इस सेकेंड एंट्री में 3,50,000 दैट इज बीइंग डिस्प्लेड हियर एज 0.35। हम उसको रीड 0.35 करते हैं, लेकिन वहां पे दिखाई कैसे दे रहे हैं? 0.35। अगर ये 0 नहीं होगा तो है तो 0.35, but there will be chances that we might miss reading the decimal.
तो हम इसको क्या रीड करेंगे 35 मिलियन, विच इज रॉन्ग। तो इस जीरो की अपनी एक इंपॉर्टेंस है ऐसी सिचुएशंस में। So we are going to say that show me zero if there is no integer value. Understood? Then point zero हम कह रहे हैं we need two decimal. अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है then show me two zeros. अब to convert it into nearest multiple of 1000, 1000 में कितने डिजिट्स होते हैं? उसको हटा दो, 1000 मतलब 3 होते हैं ना। 4 कैसे पढ़ते हो आप? 10, 100, 1000 पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? Okay, my mistake. So 1 comma when you enter, you are going to see the figure has been converted into nearest multiple of 1000. Another comma when you enter, it will be adjusting another digit from the right to left, and then it is going to convert it into nearest multiple of million. Okay. Second, अब जनरली अगर आपको किसी नंबर के साथ टेक्स्ट दिखाना है तो हम नहीं दिखा सकते, it will be converting into alphanumeric. Here you come, leave a space to differentiate between the title और जो भी suffix हम देने वाले हैं. Insert double inverted comma and write whatever you want to. आप जो भी एंटर करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मिलियन लिखिए, एमएन लिखिए, अपना नाम लिखिए, कुछ भी कस्टम टेक्स्ट लिख सकते हैं. मैं एमएन लिखता हूं एंड वापस इसको हम डबल कोट से क्लोज करते हैं. Now you can see the sample output is coming. When you click on OK and hit enter, or you click on OK, okay. When you click on OK, you can see here the output is now coming in the required format. Each cell contains the original value here, but the presentable format has been changed. You can read the figures into million, and all of them following the standard format. When you simply select a single range, okay, or this range, you will still find the sum is coming, that too in the same formatting as we have applied. Understood? Is that clear with everyone? Done? Last one? For that you will have to sit somewhere close. हाँ जी, हो गया यहाँ पर? Okay. What about online users? Are you guys done? On the top right corner of your screen, you have orange color arrow icon. Go there, write down something. Okay. उसमें आपके पास आज क्वेश्चन टू स्टाफ आता है, वहां पे जाके आप जो भी लिखोगे मैसेज that would appear on my screen. Now, next example where we are having dates and time. अब जनरली समटाइम ऐसा भी होता है कि डेट को आप कहीं बार शॉर्ट फॉर्मेट में देखते हो, समटाइम यू सी इट इन लॉन्ग फॉर्मेट, एंड वी थिंक दैट ओके इफ इट इज कमिंग इन लॉन्ग फॉर्मेट दैट मीन देयर आर टू मेनी कैरेक्टर्स. तो इस चीज को ऐसे समझो कि अगर लाइक yesterday we met, right? Did you come yesterday in the same attire? Those who joined in person yesterday, were you in the same clothes, same dress? Right? Every day you're going to appear in different attire, different look, or when you move from office to parties to casual means you are going to change your look, right? But does that person behind those clothes is also changing it? आप कह रहे हो चेंज हो रहा है, तो बॉडी रिमेन सेम, दैट पर्सन रिमेन सेम, राइट? लाइकवाइज यहाँ पर नंबर वुड रिमेन नंबर, only we are changing the presentation part. Okay, so here I have got the date enter, I press Ctrl 1 and then it takes me to the format cells dialog box. Okay, ध्यान से देखेंगे, डेट में ऑलरेडी हमारे पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, प्री डिफाइंड ऑप्शंस दे रखे हैं. We'll jump on to custom and you will look it on my screen. Okay, you can try this later. When I clear everything, it gives me the actual serial number. Single D will give you the day value in original digit from 1 to 31. Double D will give you the day value in double digit
01 say 31. Triple D will give you the days, abbreviated value, SUN, MON, TUE, and 4 Ds will give you the complete day name. आप स्लैशेस ऐड करना चाहें, कॉमा ऐड करना चाहें, स्पेसेस ऐड करना चाहें, जो करना चाहते हैं करिए. Single M will give you the month value in original digit from 1 to 12. Double M will give you the month value in double digit from 0, 1 to 12. Triple M will give you the month abbreviated value and 4M will give you complete month. यहाँ पर 5M भी होता है which gives you the initial, but we do not recommend. क्यों? January, June, July will have same initial as J. April and August would return A. So you will not be able to differentiate, right? So that is why we stick with only 4M. Understood? Okay. Now I want to have a day value displayed. So I leave a space and insert D and then put a comma. और उसके बाद single Y or 2 Ys will give you the last 2 digits of the year value and 3 Ys or 4 Ys will give you the complete 4 digits of the year value. Now, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं OK पर, so the same format has been applied. Understood? Quickly. You all try. Done? Likewise, you can apply the format on time as well, but time के केस में बहुत ही limited options होते हैं हमारे पास, है ना. जैसे इस वाले टाइम फ्रेम पर आकर मैंने कंट्रोल 1 किया, तो यू कैन फाइंड योर कस्टम. ओके, यहाँ पर आकर मैं इसको डिलीट करता हूँ. हाँ जी, अब खुद लॉजिक लगाओ. हमने यहाँ पर क्या शो किया है, देखो रटना नहीं है, आप खुद ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने डे नेम शो किया, फिर मंथ नेम शो किया, और ये क्या है, फिर डे वैल्यू है ना, 11 है, तो वो डी क्या कर रहा है, वो 11 को शो कर रहा है. तो 4D will show you the day name, comma 4M will show you the month name, space D will show you the day value, comma फिर 4 Ys और 3 Ys. ओके, अब टाइम के केस में मैंने आके यहाँ पे डिलीट कर दिया. लुक एट हियर नाउ एवरीवन. H will give you the R value in original digit from 0 to 23. Double H will give you the R value in double digit from 0 to 23. इसको आप टाइम को हमेशा आप कंपोनेंट जो सेपरेट करते हैं कॉलन कंपोनेंट से करते हैं, ठीक है. टाइम का जो सेपरेटर कंपोनेंट होता है कॉलन होता है. सिंगल एम डबल एम विल गिव यू द मिनट्स वैल्यू इन ओरिजिनल डिजिट एंड डबल डिजिट रिस्पेक्टिवली. ओरिजिनल डिजिट मतलब 1 से 59 या फिर 0 1 to 59. देन सेम अप्लाइज टू सेकंड सिंगल एस और डबल एस. अंडरस्टूड? अभी ये जो टाइम है इट इज अपीयरिंग इनटू 24 आवर क्लॉक सिस्टम फॉर्मेट. 12 के बाद वो वापस 1 नहीं होगा, इट विल बिकम 13. बट इफ यू वांट टू रीड इट इनटू 12 आवर क्लॉक सिस्टम फॉर्मेट, जहां पर आपको लास्ट में AM PM दिखाई देगा, तो यू हैव टू लीव अ स्पेस एंड राइट AM/PM. Once you do that, AM/PM and click on OK, you are going to find that 12-hour clock system format has been applied. Okay, are we done? Now, have you understood that how we change the appearance of number in a different format? I want you guys to enter 1 2 3 4 5 in one of the cell and some decimal value in another cell. आप लोगों ने देखा होगा मैं उस समय immediately quickly नंबर से डेट में और डेट से नंबर में कन्वर्ट कर रहा था. किसी ने पूछा नहीं कैसे कर रहा है, क्या शॉर्टकट है. तो अभी वो मैं शॉर्टकट्स आप लोगों के साथ एक्सप्लोर शेयर करूंगा, ठीक है. सो आई वांट यू टू टाइप दिस 1 2 3 4 5 एंड सम डेसिमल वैल्यू. Done? Now you should be on 1 2 3 4 5. Once you are there, press Control Shift 1. Press Control Shift 1. क्या हुआ Control Shift 1 जब आपने प्रेस किया? It is applying the number format separated by 1000 with 2 decimal places. Correct? हो गया सबका? Control Shift 1 से Control Shift 2.
It applies some time format. But why do we see midnight value? Would anybody like to answer this? क्यों देख रहे हैं हम यहाँ पे midnight value? How the time is represented? How it is stored? Time कैसे store होता है? Excel में we just discussed decimals. Did we enter in decimal here? No, right? So when you are going to apply time format on any integer value, if there is no decimal, it will show you midnight value. Now the same shortcut you applied on the cell where you entered the decimal, it will be showing you the time. It will convert that serial number and will show you the time part now. Understood? Come back to the cell where you entered 1, 2, 3, 4, 5. Press Control Shift 3 this time. It applies default date format, which is DD-MMM-YY. Then you press Control Shift 4, which applies custom, default currency format. Default currency format it applies. Okay. Control Shift 5, it applies percentage format. What it does, it multiplies a number by 100 and then adds a percentage sign at last. Control Shift 6, it applies scientific format. This is called scientific format. ये mainly use किया जाता है engineers के when they have to apply or work on large number calculations. 15 digit value को आपको multiply करना है 10 digit value से, right? Then they will be using this format. This E and plus denotes something. Okay. Then comes Control Shift 7, and what it does? Are you sure it does nothing? जब बाहर आएंगे उससे तो आपको उस सेल पर आउटलाइन बॉर्डर दिखाई देगी. To remove that outline border, press Control Shift minus. जब भी मैं नंबर्स या प्लस माइनस रीड करूं तो जो फंक्शन कीज के नीचे जो कीज दे रखी है आपको वो प्रेस करनी है. रिमेंबर दैट वन. कंट्रोल शिफ्ट माइनस इज गोइंग टू रिमूव दैट आउटलाइन बॉर्डर. ओके. और अगर मुझे वापस ओरिजिनल नंबर देखना है, व्हाट वी एंटर, देन विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड. टिल्ड होती है की जिसको जो बिलो एस्केप की या बिफोर नंबर 1 और अबव टैब की दी हुई है. बिलो एस्केप की और बिफोर नंबर 1 की और अबव टैब. व्हेन यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड, ठीक है, दिस इज गोइंग टू अप्लाई जनरल फॉर्मेट on the selected cell. Understood? Clear? Any doubt? Any question? What about you guys, online users? Okay. Selected. फॉर्मेटिंग हमेशा जिसको सिलेक्ट करते हैं उसी पर अप्लाई होता है. पेज ठीक है आप लोगों के लिए? पेज ठीक है? फास्ट तो नहीं लग रहा? ओके. प्लीज. इज अपीयरिंग इनटू इंडियन स्टाइल. यस. वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है. Your system is having Indian settings configured. My system is having US settings configured. Okay, so उसके लिए you have to change the regional settings. If it is business machine, then you will not be able to change. वो आपका IT person ही change करेगा. Okay. Next we have comments feature. Comments in Excel are used to leave additional information with regards to a particular cell. Suppose I come here and I make some changes. Okay, I just come here and I make changes. For example, 8 metros से मैंने इसको non metros कर दिया. My manager tells me that okay, you just make the changes and make it non metros. Now I can't deny the request raised by manager or the senior. I'm tend to actually make the changes, but the rule for the data analysis is very clear. You will not make any changes, or you cannot make any changes without
having documentations. Everything has to be documented in your case. Why? You are only going to follow the instructions when it comes to data. Okay, data जैसा आपको provide किया गया है, आप उसी को as it is use करेंगे. In case if anyone asks to make changes, that person should have that authority and should be putting or giving you this thing on email. Now, if you fear that, okay, you cannot ask, then one option you have is called comment. Apart from that also, if any modification you are going to make, any changes you are going to make, and you want to leave a note for your reference also, so that after 10 days, 20 days, if you forget that why did you make changes, at least आप उसको रेफर कर सकते. तो एक तो तरीका है कि हम उस रो में जाएंगे एंड वो रिमार्क्स कॉलम में क्रिएट कर देंगे. But remarks you will create it for the entire record. What if we have 10 changes and 10 different places in the same record? It will be too difficult for us to put all those updates or all those changes in one single remark. So what are we going to do in such cases? We'll come to that cell and we'll do right click and then यहाँ पर आपको दिखाई देगा insert comment. Okay. Or under review, you will see the comments category and you have the option called new comment. अगर आपके पास 2021 या 2019 या 365 है, then आपको comments के साथ साथ notes भी दिखाई दे. अगर आपको सिर्फ comments दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब you have old version of Excel. If you also see notes and comments both, then you have the latest Excel engine, or you're working on latest Excel or modern Excel engine. You can check once in your Excel. Understood? Up. If you are seeing both the options, then your comment has been replaced with notes. If you only have on comment, then you have the old comment. The old comment has been replaced with notes and the new type of comment has been introduced here. अब मैं जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ notes पर, न्यू नोट पर जैसे मैंने क्लिक किया, this yellow caption box would be inserted in that cell, pointing to that cell with the red trigger. Now, whatever you want to type, this is just an example of old comment, or now known as notes. Escape here. Okay. One time you escape, it is going to disable. You cannot edit anything. One more time escape, it is going to simply hide. So either आप review में आकर notes पर, new notes पर, या फिर comment पे click करें, or you go to right click and then click on insert comment. या इस केस में मेरे पास notes भी हैं, तो मैं new note पर click करूँगा. Okay. This is second example of. आप यहाँ पर देख सकते हैं. Okay. These things you can try later on. अब इसका मेन इशू, इस कमेंट के साथ काम करने का जो मेन चैलेंज आ रहा था हमारे पास, वो ये था कि इफ यू इवन डोंट टाइप एनीथिंग, you leave it empty, then also it will be added. It is going to increase the size of your file, will make it heavier. ठीक है, क्योंकि ultimately this is also one of the object property पे हमने उसको ऐड किया. Another issue we were facing it. Suppose अब मुझे सारे comments देखने. So I come to notes and say show all notes or show all comments. Now you notice that it is showing, but it is overlapping some of the comments. और जब आप filter में काम करते हैं, तो their location may change. As in like ये जो box है, it might appear on somewhere else. Now to overcome this situation, Microsoft has introduced a feature called new comment or comment. Okay, and the old comment has been replaced with notes. And the idea for this, the new type of comment, was taken it from Word and PowerPoint. अब मैं यहाँ पर आता हूँ, I just click on new comment and then you would notice not only it captured the profile picture, the username, but also showing me the cell address here. I am asked to start a conversation. So the new comment allows you to open a thread. Okay, conversation. This is an example of new type of comment. Submit, control, enter. And then it captures the date and time also. You don't have to worry about that. Okay, making a manual. Escape, it will be hidden. Once more, right click, I go and click on new comment and then it gets added. Okay,
I just type this is another example of comment. Control enter and then this gets added, right? Any doubt? Now, इशू कहां पे आता है? सपोज अब मैंने न्यू कमेंट पर क्लिक किया and then I find here I do not want to type anything, so I escape. क्या होता है? This is also added. What is it? अब सपोज मैं दूसरे सेल पे जाता हूं, वहां पे न्यू कमेंट पे क्लिक करता हूं, तो इमीडिएटली इट विल टेक मी बैक टू द सेम सेल वेयर आई लेफ्ट कमेंट एम्प्टी. So it will push me either you post your comment or you delete your comment. Okay, if I delete, then the comment will be deleted, which means you cannot have any empty comment. Clear है? अब आता है next part. What if I want to see all comments? So the best thing is in this case, ये जो comments का टैब दिखाई दे रहा है आपको, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं या show comments पे क्लिक करता हूं, it is going to open a comment pan on the right hand side. In the comments pan, you can see all comments are visible here, correct? You can find all comments are visible here. You can read the description, you can also read the cell addresses. Okay, plus अगर आपको response करना है, you can come here, you can respond it. This is just a response example. Submit and it will be capturing it. If you find this is resolved, you can resolve it. It will not further accept any input from anyone. Okay, clear? Any doubt? समझ आया नोट्स का या कमेंट्स का पर्पस क्या है? ऑनलाइन गाइस, हैव यू अंडरस्टूड? Okay, all right. Now next we have, हाँ पूछिए. कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे आप, इट सिलेक्ट सेल्स दैट कंटेन कमेंट्स, और फर्दर आप जाके अब यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर सकते हो, इट विल बी डिलीटिंग. अभी ये जो शॉर्टकट है, इट डजंट वर्क ऑन द न्यू टाइप ऑफ कमेंट, इट वर्क्स ओनली ऑन द ओल्ड टाइप ऑफ कमेंट्स. कंट्रोल शिफ्ट ओ, या फिर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ओ याद नहीं रख पाते, कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल एंड देन यहाँ पर आपके पास नोट्स या कमेंट दिखाई देगा. इवन अगर आप ब्लैंक सेल सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल जी स्पेशल पे आए, तो ब्लैंक्स पर आप सिलेक्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट करेगा. ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिव्यू में डिलीट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर सकते हैं. ठीक है, नहीं कोई शॉर्टकट. डन. नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर. Format Painter is a feature in Excel that allows us to quickly copy the formatting from one cell to other cells. Suppose यहाँ पर ये formatting applied है. The cell has bold. It is having a background color. The font point is also increased. Okay. Now I would like to apply the same formatting on this cell. तो या तो मैं एक एक करके अप्लाई करूं, or simply I'll keep my cursor here, come under home, click on this format painter option, and then I take my mouse pointer. Notice this time paintbrush is also coming along with mouse pointer. I simply go and just click on the cell where I would like to apply the formatting, और जैसे क्लिक करते हैं फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है. सिमिलरली अगर आप एक टेबल की फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं तो टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर आकर क्लिक करेंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू टेक योर माउस पॉइंटर ऑन द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द फॉर्मेटिंग. ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करेगा, डेटा को पेस्ट नहीं करता. ठीक है, अगर मैं भी कहीं और क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं फर्दर फॉर्मेटिंग इज नॉट बीइंग अप्लाइड. अब अगर मुझे वही फॉर्मेटिंग बाकी दूसरे सेल्स पे भी अप्लाई करना हो तो उसके लिए हमारे पास होता है डबल क्लिक मेथड. ओके, लास्ट वाले एग्जांपल पे आप आएंगे सब लोग. Keep the cursor on a cell where you have the formatting, and then you will take the mouse pointer to the format painter और डबल क्लिक करेंगे फास्ट. डबल क्लिक किया, उसके बाद आप वापस एक्सेल पर आएंगे,
and then wherever you click once, you would still find the paintbrush icon is there. Correct? It means आप continue कर सकते हैं उस formatting के साथ till wherever you want to go. You just click it. Once you're done, press escape to cancel that. Okay. सिंपल आप उस सेल पे जाएंगे जहां पे फॉर्मेटिंग है और डबल क्लिक करना है फॉर्मेट प्रिंटर. Once you are done, just simply press escape to cancel the action. Understood? Any doubt? कैसे चल रहा है? समझ आया अभी तक जितना भी हमने किया?